जिसकी 10 किताबें हैं और इस किताब में इस पॉडकास्ट में विल टॉक अबाउट द सेकंड बुक इन द एरिस्टोटल्स निकोमेकियन एथिक्स। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी अबाउट द फर्स्ट बुक, जिसमें एरिस्टोटल बात करता है अबाउट the notion of human happiness, how you can achieve eudaimonia. Eudaimonia is what Aristotle calls happiness. You can call that man's search for meaning, which gives him happiness. You can call that pleasure. You can call that the absence of all negative feelings or emotions. Anyway, एरिस्टोटल सेकंड बुक में बात करता है कि हम नहीं जान सकते कि ह्यूमन हैप्पीनेस है क्या चीज़ अनलेस वी फिगर आउट कि वर्च्यू क्या चीज़ होती है। व्हाट आर वर्च्यूज़ एंड व्हाट आर वर्च्यूज़ हैबिट्स और डिस्पोज़िशंस जिनके अंदर जो प्लेज़र होता है इंट्रिंसिक होता है एंड देयरफॉर अ पर्सन हू इज़ वर्च्युअस और हैज़ वर्च्यूज़ हैबिट्स और डिस्पोज़िशंस दैट पर्सन कुड ट्रूली बी हैप्पी। एंड वर्च्यूज़ की जब वो बात करता है तो वो कहता है कि 2 काइंड्स ऑफ वर्च्यूज़ हैं। एक है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और एक है मॉरल वर्च्यू। हम इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ सीख सकते हैं बाय इंस्ट्रक्शन और मॉरल वर्च्यूज़ जो हैं वो हम हैबिट और कांस्टेंट प्रैक्टिस से सीख सकते हैं सिर्फ। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है कोई इंसान, गिटारिस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन ओनली learn the guitar the right way by actually practicing, not just by learning theory या music theory वो पढ़ लेगा और वो समझ जाएगा अच्छा how to be a good guitarist, but he can only reach that point by actually practicing. And that's how you get good at moral virtue, which is what Aristotle calls as virtue that is cultivated by constant practice. इंटेलेक्चुअल वर्च्यू दूसरी तरफ आप वो इंस्ट्रक्शन से मेनली या बेसिक थियरी से भी आप सीख सकते हो विदाउट द नीड फॉर मच कांस्टेंट प्रैक्टिस। सो इस किताब में एरिस्टोटल बात करता है जनरली अबाउट वर्च्यू एंड आई हैव जस्ट पुट आउट अ बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन के वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्च्यूज व्हिच इज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल, and now we'll get deeper into it. So those were just the opening remarks. Naman, do you have to say something about this or the introduction? Yeah, फिर we should just move Dullah, onward. introduction was very good. Yes, already told कि ये book two है, इसका chapter one था, which was about uh, intellectual virtues and uh, virtues Happiness. of character. Okay, so you already told कि intellectual virtues, if they can be learned through through following Instruction. instructions, and Moral virtues. whatever the moral virtues can be. अब मैं like थका हुआ इतना, मैं दिमाग बिल्कुल फारिग हुआ हुआ है इस वक्त। So moral virtues हैं, yes, you already told कि वो habit के जरिए सीखे जा सकते हैं। और इसमें इतना कुछ it's just straight to the point बात, इसमें इतना deep जाने की हमें ज़रूरत नहीं, because throughout the book different में अगर हम आगे जाएंगे बुक नंबर 3 की तरफ भी जाएंगे तो ये बात दोबारा से डिस्कस होगी, दोबारा से सामने आएगी। उसमें हम बेसिकली वर्चू मॉरल वर्च्यूज़ को ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे, तो उसमें ये बार रिपीट होता रहेगा। मगर उसमें एक बात उसने की थी कि जिस तरह आर्ट के अंदर और इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ के अंदर समवन कैन बी a good pianist or a bad pianist, for example. Similarly, in terms of virtues, there can be degrees of different virtues within different individuals. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि मॉरल वर्च्यूज़ के अंदर भी डिफरेंट डिग्रीज हो सकती हैं, जिस तरह के इंटेलेक्ट या इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ या आर्ट्स के अंदर भी डिफरेंट देयर कैन बी देयर कुड बी अ बैड मैथमेटिशियन और एंड वेरी वेरी गुड मैथमेटिशियन। सो ये जो हमें डिफरेंस है ना of character between a bad virtue और good virtue, और फिर जो उनके बीच में सारी जो चीज़ें लाइक करती हैं, वी आल्सो गोइंग टू डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन आगे जाके। और देन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो जाएगी। बट अब्दुल्ला, yes, you already told the first point, which was very straight in nature, but yes, uh, in the second chapter, basically Aristotle is trying to tell us the nature of virtue, or he relates the virtue to the soul. He relates virtue to making right choices. He's saying कि जो virtue is something part of a soul. It's or there because uh,
because virtue is involved in making right choices at the right times based on our reasons. Again यही बात जाके आगे बुक 3 में भी रिपीट होगी. अभी हम जल्दी इसको बस रैप अप करेंगे. बट यस, so these जो virtue है, virtue is placed in our soul rather than our body. So he's telling the nature of virtue the virtue exists in our soul. This is kind of similar to the life as we discussed in Plato's dialogue, Phaedrus, I think so. उसमें भी virtue था. Virtue was something that was the balance between three things. I think so: soul, reason, and appetite. तो similarly यहाँ भी Yeah, हमें वो देखा. tripartite phase of the soul you're Yes, talking वही. about. Yeah. So similarly over here, not similarly, but आप कह लो कि vaguely इस वक्त जो है, uh, Aristotle is trying to say कि virtue is based on soul, or then he also distinguishes between virtues and other good qualities. He's saying that being wealthy or being good looking is not a virtue; it's a different kind of quality. Those are qualities. Virtues are something different than qualities. Virtues are something that you acquire through habit. Virtues are not something that you are born with or you acquire uh, physically or physical or materialistic things. It's something that is placed in your character or that is placed in your soul. So, Lad, do you want to add anything over here? Yeah, you're right about virtue. Aristotle कहता है कि it's something जो आपकी एक impulse नहीं होती. It's not a feeling. It's not a feeling which can just come and go as it pleases, but it is rather a habit या disposition है. Disposition कि आपकी एक inclination है. अगर आप उसको right way cultivate करते हो तो it becomes a part of your soul in the way कि it never goes away, and if you have that in you, if you have that disposition to you will naturally be inclined towards more virtuous conducts rather than vicious conducts. So it becomes a part of you and it guides your behavior. So that is why you need constant practice. क्योंकि intellectual virtues तो आप कह सकते हो कि some academic virtues उसमें आ जाते हैं, जिस तरह being a good mathematician, being a good philosopher. Those kinds of virtues are intellectual virtues, but moral virtues, on the other hand, like courage, generosity, kindness, ये जो moral virtues हैं, these you learn not by instruction merely, but by constant practice. You practice it. You practice the art of moderation, practice the art of generosity or courage, and you learn all these moral virtues by constant practice. फिर एरिस्टोटल कहता है कि we're gonna say something on. नहीं नहीं, बस मैं इसमें एक बात वो डिस्कस करनी थी कि इसी इसी वीडियो चैप्टर में एक बीच में बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट मुझे लगा जो बताता है हमें एरिस्टोटल, जो कि बार बार रिपीट होता रहेगा एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मॉरल क्वालिटीज़ की नेचर है कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द डिफिशेंसी या फिर एक्सेस ऑफ द वर्च्यू. ठीक है. For example, virtue, there is a virtue of being brave. The deficiency of braveness in a person can cause cowardness, but the excess of braveness in the same person can cause, you can say, recklessness. So he's saying कि जो virtue है, the virtue itself can be destroyed by its own excess or its own deficiency. ये हमें बात अभी ये भी थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे जाके दोबारा रिपीट होगी. बस आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस मच. या एरिस्टोटल जिस तरह यू सेड कि एफिशिएंसी या फिर पार्सल है एक. तो या लाइक यू सेड कि एफिशिएंसी नहीं, एक्सेस या डेफिशिएंसी जो है ना इट कैन करप्ट द वर्च्यू इटसेल्फ, एंड दैट वाज अ गुड एग्जांपल दैट यू गेव. एरिस्टोटल तभी कहता है कि to avoid such situations what you need to do is you need to seek out the mean of these behaviors, and you need to avoid the extremes because these extremes, excess or deficiency, these corrupt the virtue itself. And
So you need to find out the mean between these, which is moderation, which avoids both excess and deficiency, and that is usually the sphere of virtue. That is the sphere of virtue jo which lies in between, which lies at the mean of the two extremes. लेकिन वो कहता है कि it is not practically possible कि ये जो mean होगा between two extremes ये हर इंसान के लिए same होगा. It cannot be that way. So हर इंसान के लिए different extremes होंगे, different densities होंगी उन extremes की, and therefore different mean होगा उन दो extreme behaviors का. So what these individuals need to do is to find out their own extremes, find out theoretically, of course, find out their own means of those extremes, and then use practical wisdom to 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 find out कि वो mean कहाँ lie करता है, and then follow that mean. Because the mean is not the same for everyone; it differs from person to person. So जिस तरह courage है, courage lies somewhere between finding a mean between the extremes of rashness and cowardice. और जो specific courage होती है, even though it varies from situation to situation, but the right amount of courage is only found at the mean, at the center of rashness and cowardice. एरिस्टोटल फिर कहता है कि वर्च्यू की तो हम बात कर रहे हैं, बट how do you know okay, which people do have virtue or are virtuous, and how do you differentiate between them and the people who just act rightly or virtuously by accident? You might come across a lot of people who जो बड़े hard to categorize होते हैं, because sometimes they act in this way, sometimes they act in that way, but sometimes they act virtuously, sometimes they don't. So, how do they act virtuously if they are not, in fact, virtuous in its totality? That might be by accident, that might be due to impulses, that might be because of fleeting feelings. So, Aristotle कहता है कि how do you differentiate between these kinds of people and the people who are actually virtuous, who have that virtuous disposition which is inculcated by constant practice. He says the तीन criteria हैं to differentiate between these people is कि पहले first ये जो virtuous लोग हैं they know कि they are behaving in the right way. उनकी उनकी एक conscious awareness है कि हाँ we are doing this action, whether it is caused by our thought processes या फिर our behavioral patterns, whatever it is caused by, but we know कि the end of our outcome is either good or bad. If they are acting in a right manner, they will know that this right behavior will elicit a right response, and they will be conscious of both the means and the ends. और उनको पता होगा अच्छा at this point in time हम एक action कर रहे हैं और इसकी intention और इसका outcome is likely to be right, it is likely to be virtuous. And so this is the main differentiating factor between the people who are right by accident or virtuous by accident and those who have a virtuous disposition and are actually, in fact, virtuous. Okay, they are consciously aware of the fact that they are virtuous. And the second is कि even though they उनके अंदर भी impulses होती हैं sometimes कि something that might benefit them, it might be wrong, something that might harm them, it might be the right thing to do. So they might feel impulses to do it or to not do it, even if it's against their interests. But they they act virtuously for the sake of being virtuous, in the sense that it is they won't only act right when it is the time for them or it is convenient for them to act right, but they will also act virtuously when it is not convenient for them to act virtuously. They will do it if it's against their interests, they will do it if it potentially harms them even. And so उनका जो pleasure होगा ना, it will not be associated with the end anymore but with the means. It will be associated with the process overall. Like some people give out to the poor, ताकि जब आप उनको एक एक सड़क पे इंसान बैठा हुआ है, आप उसको पैसे दे रहे हो तो उसके जो चेहरे पे स्माइल होगी, यू जस्ट डूइंग इट फॉर दैट काइंड ऑफ अ डोपामाइन हिट, यू कैन से कि you're gratified by their gratification by seeing the smile on their face. But if you're doing that solely for helping people,
So your pleasure will not associate itself with the outcome, but with the process itself, by the means itself, by the fact that you are in fact doing a virtuous thing. So Aristotle says that there will be a time when this person who is not accidentally virtuous, this person will know that we're acting in a right way. And then lastly, इनका जो बिहेवियर होगा ना, वो वेवरिंग नहीं होगा, वो फ्लीटिंग नहीं होगा. इट विल नॉट बी कि आज ये सही तरह बिहेव कर रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट डे देर एक्टिंग नॉट सो वर्चुअसली और विशियसली. दिस विल बी ऑफ अ फिक्स्ड डिस्पोजिशन, नॉट ऑफ अ वेरिंग डिस्पोजिशन. इनकी कोई ज़्यादा फ्लीटिंग बिहेवियर नहीं होगा, ज़्यादा रेंजेस ऑफ मोशन नहीं होंगी उसमें. इफ दे आर वर्चुअस, so they are virtuous. They are not vicious. They're not sometimes virtuous, but they're acting in that manner consistently. So, Numan, would you like to add to that? अब्दुल्ला, बिल्कुल ज़बरदस्त बात आपने की। लाइक द पर्सन, if he is only doing acts, virtuous acts when it's convenient for him, is not rightfully a virtuous person in itself. मगर इसमें एक पॉइंट मैं और भी ऐड करना चाहूँगा जो कि अरिस्टोटल ने हाईलाइट किया है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान एक एक्ट करता है, और वो एक्ट करते हुए या फिर वो काम करते हुए या फिर किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए उसको खुशी मिलती है या दुख मिलता है, उसको प्लेजर मिलता है या फिर उसको डिस्ट्रेस मिलता है, दैट फीलिंग ऑफ प्लेजर और डिस्ट्रेस और दोज फीलिंग्स और दोज इमोशंस सेंसेशंस, वो हमें बताती हैं कि इंसान का करेक्टर कैसा है। फॉर एग्जांपल कि अब्दुल्ला के या समवन इज एब्सटेनिंग फ्रॉम बॉडीली प्लेजर्स, और ऐसा करते हुए उसको वो enjoy कर रहा है his virtue state. He is enjoying while abstaining himself from bodily pleasures. तो ये शो करेगा कि उस बंदे का करेक्टर जो है ही हैज़ अ वर्चुअस करेक्टर। बट द सेम पर्सन जो कि बॉडीली प्लेजर से अवॉइड तो कर रहा है, लाइक वो एक अपने आप को किसी बुरी चीज़ से बचा तो रहा है, बट द फैक्ट ही इज़ नॉट एंजॉयिंग इट और ही इज़ फीलिंग पेन इन डूइंग दैट गुड और वर्चुअस एक्ट, shows that कि वो पर्सन जो है वो in fact he is not a good person, he is not a virtuous person. तो जब भी आप कोई एक्ट कर रहे हो उसके साथ जो अटैच्ड फीलिंग है, इट शोज योर करेक्टर। अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, एंड while doing that you are feeling pleasure, it means that you are a virtuous person. And if you are doing the same act and you are not feeling pleasure while doing that virtuous act, or you are feel or in opposite you are feeling distress or you are feeling angry while doing that virtuous act, it means कि जो आपकी true nature है, आपकी true nature virtuous नहीं है, आपकी true nature is something else. You are just trying, or you are just forcing yourself to be virtuous, and deep within you lies your true self, जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल बताई अरिस्टोटल ने। इस एग्जांपल इस काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर एक बंदा है ही फेसेस डेंजर हैप्पीली, और वाइल फेसिंग डेंजर, like he knows the danger in front of him but he's facing that danger happily, वो उसको प्लेजर मिल रहा है उस डेंजर को फेस करने से, it shows कि he is in a virtuous state. But the same person who is facing the danger but in inside he's feeling distress, or he's feeling you can say he's not feeling good while doing that virtue side, it means कि वो in fact a coward है who is just trying to he's just doing the stuff which is forced upon him. तो जो फीलिंग्स हैं जो हमारे एक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, दे शो ओवर ट्रू डिस्पोजिशंस और ओवर ट्रू करेक्टर्स। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग ओवर हियर अब्दुल्ला? हाँ, यू राइट इन द सेंस कि एरिस्टोटल कहता है कि you will know you're virtuous when, even if you're confronted with a very difficult situation which you do not otherwise would not otherwise have liked to confront. And आपकी फीलिंग इस तरह सिचुएशन के बारे में कि you're not disgusted by it, you're not thinking कि अच्छा why am I in this situation या how do I get out of it at once, but you're like okay, I will confront this, and you will not fear that situation or that particular event or that person, but you
You'll see it as a chance to kind of for your virtuous behavior to manifest itself कि आप कहोगे अच्छा this is one more chance that fate has given me to act virtuously. So you will see it in a positive light, and that's how you know okay you're taking pleasure in the virtue itself by its very definition, but not in its outcomes. So yeah, इसके बाद with हमने अभी तो डिस्कस किया ना कि virtue lies somewhere between the two extremes. Yes, और we already explained the doctrine of mean. But Abdullah, I was thinking कि we should make a video on Socrates temperance. Socrates का जो आइडिया था टेम्परेंस का आइडिया वो we've done that. हमने एक एक ना ना पॉडकास्ट में बात की है। ना अब फिर अभी बनानी सुन है। तो ले हुँ, मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक सो वी शुड मेक अ वीडियो ऑफ डिस्कसिंग द टेम्परेंस वर्सेस द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन सोक्रेटिस का जो आइडिया ऑफ टेम्परेंस versus Aristotle's doctrine of mean. What do you इट्स think? वेरी सिमिलर वैसे अगर मुझे सही याद पड़ रहा है आई रेड दैट डायलॉग अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो लेकिन आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सोक्रेटिस सेड कि इट लाइज बिटवीन द मीन ऑफ टू एक्सट्रीम्स टेम्परेंस की डेफिनेशन थी ना उसकी We will discuss that later, but there are some differences in that because मैं उसके बारे में थोड़ा सा कल परसों पढ़ रहा था. तो yes, we can make a video. It will be a short video, just 10 to 15 हम्म, minutes, but it's an interesting idea. So yes, एक और बात डिस्कस करें थी अब्दुल्ला. हम्म। While on his course to define virtue and find virtue, Aristotle is trying to find the genus of virtue. कि virtue है क्या? Is virtue a feeling? Is virtue a choice? But he comes to a conclusion that virtue is not a feeling or anything related to it. But virtue is in fact it's a state of character. Do you agree with it? Yeah, it is a state of character, it is a state of your being. जिस तरह होता नहीं है it's an adjective, and an adjective describes who you are in your totality. If I say कि you are a good person, या फिर if I say कि you're a very licentious person, it describes your character, it describes your state of character. So if I say you're a virtuous person, it describes your mode of being, your state of being, or your state of character. So it's not something you achieve accidentally, just by a whim. It requires a lifelong devotion of acting rightly, of giving yourself away to this discussion of virtue, sorry, definition of virtue, like platonic form. The good itself, you have to approach it not only as an abstract idea, but as an actual thing which you can achieve in your life by constant practice. So you constantly um, approach that distant shimmering light across the horizon in the hopes that you actually achieve it. And I don't think if any man could ever claim that they are virtuous, because it's like Jordan Peterson says now about belief in God. How can anyone dare to believe in God? None of us believes in God. None of us can ever believe in God, because to believe in God um, is to manifest the most excellent of qualities. कि आप इतना rightly behave करो, and you have acquired all of the virtues to such an extent कि you play out God as if you yourself are a God. But that is not humanly possible, to be maximally courageous and maximally virtuous and maximally good, because those are the qualities of God. And so if you cannot act out the best of your behaviors and your conducts, so until then you cannot claim that you believe in God. So in the same way, it is that we would like to think that we are virtuous, but to be virtuous requires such a lifelong devotion to truth, to virtue, to courage, to justice, which is just something that we can hope for. It is not about, I think so. It's not about um,
being, it is about becoming. So it is about becoming virtuous, because to me it's just like the one who claims that they're virtuous, they're not virtuous, because if they were, they would, we would see it in them. They would not have to point it out to us. And yeah, I just think it, even though Aristotle talks about it in a very theoretical manner, it is something जो एक बड़ी लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस के सेशन के बाद आपको शायद आप उसका कुछ पार्ट अचीव कर सकते हो वर्ची. मतलब अब एक और बात और है, ऐड कर सकते हैं हम एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल कहता है कि एक्सीलेंस जो है, एक्सीलेंस जब भी किसी के पास होती है, एक्सीलेंस whenever anything achieves excellence, excellence enables that things to function very well. So similarly, when human when humans achieve the state of excellence, it is achieved by virtue, because human excellence lies within virtue, because you can say that it enables us to function well. Virtue, basically, because virtue is the state of excellence that enables humans to function well. But ये वही आपकी बात कवर होगी अब्दुल्ला over here. But Abdullah, at the same time, as you already told, कि it is impossible for us to. Uh, that is why maybe uh, there's you saw this shit, जैसे कि तुमने अभी जॉर्डन पीटरसन की एग्जांपल दी कि none of us really believe in God. अगर हम really believed करते God में, we wouldn't be doing the things that we do on daily basis. We act as if no one is seeing us, or no one is counting our mistakes, or no one is noting down our bad habits, or praising us for our good habits. Maybe that is why we think that we are alone all the time, and we do the things in in a state of darkness. पर अब्दुल्ला, जैसे कि हम लोग एक enlightenment achieve करते हैं, it comes uh, with the idea of God, with the true belief of God. When you start believing in God in the true sense, you know that someone is watching you all the time, and he's around you, and he's everywhere, and he's noting down your bad deeds, or he's also noting down your good deeds as well. So yes, there have been people in history who might have come close to that excellence. हमारे जो प्रॉफिट थे, वो तो प्रॉफिट्स तो होते ही उस एक्सीलेंस के सबसे करीब हैं, वो उस वर्चुअस एक्सीलेंस के सबसे करीब होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वो अल्लाह ताला की जो है हुक्म है, उसका अल्लाह ताला का जो मैसेज है, वो अल्लाह के हुक्म से लोगों तक पहुँचाते हैं। और अल्लाह ताला मेक श्योर करते हैं कि जो प्रॉफिट है उसका करेक्टर ऐसा हो कि पीपल लुक अप टू हिम, एंड they believe कि yes, God is God is watching all of us. So yes, sure, you are very right कि it takes a lot of practice of habit to achieve that state. But yes, but we can strive for it, definitely, Villa. या एक तो ये जो स्पेयर ऑफ सब्जेक्टिविटी है ना, इससे निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम कन्फ्रंटेड विद अ सिचुएशन, और I forgot that paradox. I think so. It was the trolley paradox or something. तो इट्स लाइक एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और उस ट्रेन की पटरी पे ना 5 लोग हैं जो कि आगे लेटे हुए हैं, बंधे हुए हैं जो भी, और ट्रेन उनके ऊपर से गुज़र जाएगी, किलिंग ऑल 5 ऑफ देम. बट यू हैव द पावर, यू हैव द पावर टू चेंज द कोर्स ऑफ दैट ट्रेन, कि वो अपना रास्ता चेंज करे, वो दूसरे ट्रैक पे चले जाए, लेकिन उस ट्रैक पे एक बंदा सिर्फ लेटा हुआ है और उसकी जान जाएगी. तो यू हैव 2 ऑप्शंस, कि आप आइदर उस ट्रेन को चलने दो एंड यू लेट दैट ट्रेन किल 5 पीपल, या फिर आप उसका रास्ता चेंज करो एंड देन 1 पर्सन डाइज़ ओनली. व्हिच वन वुड यू चूज़? Hmm, it's a very tricky question.
कि 2 ट्रैक्स में से we have to take one of the tracks. Yes, obviously we would try to take the we would try to minimize our damage. So एक बंदा नीचे आने दो, कोई बात नहीं, मगर 5 बच जाएँगे उससे। बट द थिंग इज़ कि दिस वे दिस विल डायरेक्टली बी योर फॉल्ट। ये पहले तो ट्रेन अपने रास्ते पे जा रही थी। 5 लोग तो मर रहे थे लेकिन उसमें आपकी इंटरफेरेंस नहीं थी। बट व्हेन यू कॉन्शियसली प्रेस द बटन और आपने खुद से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हुए रास्ता चेंज किया, देन इट वाज़ डायरेक्टली ऑन यू कि यू किल्ड दैट फर्स्ट पर्सन। लेकिन दूसरे केस में अगर 5 लोग मरते भी, इट वुडंट हैव बीन ऑन यू। But wouldn't we be responsible for saving 5 people? या यू वुड बी, दैट्स द राइट आंसर एक्चुअली। Uh, I ask this from a lot of people, and they usually say कि यार I couldn't live with the guilt of killing one person consciously, कि मैंने बटन बजाया तो उस बंदे की जान गई, वरना मेरा क्या था, ट्रेन तो चल रही थी, वो 5 लोगों को मार देती। तो टू एस्केप दैट गिल्ट दे सेड कि यार एक पर्सन को नहीं मारूँगा, मैं 5 को मरने दूँगा क्योंकि मुझे इंटरफेयर नहीं करना, मरे 5। मैं गिल्ट के साथ नहीं रह सकता। दैट्स द आंसर मैनी पीपल गिव टू मी। But बट but doesn't that make you selfish? इट मेक्स ना, so that's why I brought this up in this virtually podcast. The virtue is about something which is not concerned with your being, अपनी जात से निकल के, if you can contemplate on the notion of the greater good, which is in fact here saving 5 people compared to one, even though आपकी पूरी जिंदगी गुजर सकती है गिल्ट में कि you consciously killed that one person, even though that is the case, but you chose the greater good, and that is how you know कि you have that virtuous disposition क्योंकि you put aside your self interest and you thought about the greater good. So that is why I say virtue is to some extent subjective, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि यार अच्छा I would save that one person and I am virtuous, काफी लोग कहते हैं I would save those 5 people and I'm virtuous. So virtue does not concern itself does not concern itself with a very short sighted view of goodness, but with with everything in its totality, कि it concerns itself with greater good, I think so. और उसको कॉन्टेम्पलेट भी करना काफ़ी लोगों के लिए नहीं आसान होता, क्योंकि वो अपनी इनकी ज़िंदगी ऐसे गुज़री होती है कि दे हैव इम्पल्सेस टू ओनली थिंक अबाउट देयर ओन गुड। जो उनके लिए सही है दे थिंक इट्स अ वर्च्यू, जो उनके लिए सही नहीं है दे माइट नॉट इवन ट्राई टू थिंक अबाउट दोज़ थिंग्स। सो वन लास्ट थिंग अबाउट द मीन ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि देयर आर सम एक्सट्रीम्स जिनके लिए कोई मीन नहीं होता, वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं सिर्फ। जो मीन है इट्स काइंड ऑफ अ ग्रे एरिया अगर आप इसके बारे में सोचो, बट कुछ चीज़ों में ब्लैक एंड वाइट ही होता है, जिस तरह मर्डर है, एडल्ट्री है, या फिर um, शराब पीना, या फिर ऑल दोज थिंग्स। देयर इज नो डेफिशिएंसी एक्सेस वाला चीज़ वहाँ पे, देयर इज नो मीन बिटवीन deficiency and excess, there is only black and white, कि it's wrong in its totality, murder is wrong in its totality। ये नहीं कि यार 10 कत्ल करना बुरा है तो 0 कत्ल करना अच्छा है, तो आप 5 कत्ल करो बिकॉज़ दैट्स अ मीन। That's not the case। It's just it's either wrong in its totality या फिर it's not। So in those things जहाँ पे बड़ी black and white debate है, तो it's obviously that you abstain from them totally। You do not approach those things। So yeah, that's pretty much what Aristotle talks about in the book। Do you want to discuss something else, Waleed, in this episode? We could take this somewhere else, या फिर what? Abdullah, yeah, बस यार मैंने अभी वही yes, the last point that you were telling, that there are some blacks and whites in terms of in terms of virtues, or in terms of those things, जैसे कि तुमने एग्जांपल दी कि अगर मर्डर जो है, मर्डर यू कि मर्डर ना करना इस डेफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा मर्डर करना इस एक्सेस, तो हम उसके बीच में 5-10 लोगों को लुढ़का दें, मगर बोला दिस थिंग इज प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। we do you can say justify our bad deeds by comparing them to those happening in the society. For example, जैसे कि तुम एग्जांपल ली ड्रिंक, शराब पीने की। अब एक इमरान शराबिया खान जो है, बोलते हैं सारे चोर हैं मैं करूं तो क्या मसला। हाँ, अब वही ना, अब शराब फॉर एक शराबी हाँ, है, बिल्कुल ठीक कर है, रहा हूँ। अब एक बंदा है, ही ड्रिंक्स, और वो ये सोचता है कि यार मैं आप पाकिस्तान, लेकिन एक तो उसका एक्सट्रीम है कि बिल्कुल ना पीना, और इसका एक्सट्रीम है कि बहुत ज़्यादा पीना। अब वो ये कहेगा भाई कि मेरी सोसाइटी में जो लोग हैं, ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जो कि नहीं पीते। दोज दैट एक्सट्रीम इज
वेरी फ्यू। और और जो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो भी एक्सट्रीम कुछ थोड़ी तादाद में कम है। तो मैं उसका मॉडरेट रास्ता इख्तियार कर लेता हूँ। मैं कभी-कभार वीकेंड्स पे शराब पी लूँगा या मैं क्रैक यूज़ कर लिया करूँगा। So these type of things that we are doing in we are just trying, we think that we are doing in moderation ends up destroying our character. ऐसा है कि नहीं अब्दुल्ला? और यही हो रहा है आजकल हमारी सोसाइटी में, वाई वेदर इट्स वेस्ट और वेदर इट्स पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी जो अ, अगर एक यूथ है, यूथ में भी कोई लड़का कोई बुरा काम कर रहा है, ही इज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज सोसाइटी एंड और ही इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज एक्ट by uh, thinking about, by comparing it with the deeds of the society around him. What do you think, Abdullah? यार ये तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी में टाइम आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर नॉट बोर्न रैशनल पीपल। हम लोग कॉन्शियसली अपनी अपने आप को तलाश नहीं करते हैं। वी डू नॉट गो लुकिंग आउट फॉर आवर सेल्फ विद द कैपिटल एस, एज इन कि हम हैं क्या चीज़, व्हाट, व्हाई वी आर द वे वी आर, व्हाई डू वी डू द थिंग्स वी डू। व्हेन वी गेट इनटू इट, we will realize कि हमने जो काम किए हैं in the past, were they virtuous, were they vicious, and how not to repeat those mistakes again. And then you get into the good and the bad itself कि क्या गलत है क्या सही है, and if you get into that, so you're more likely not to repeat the mistakes जिनसे आपका ज़ाती नुकसान हुआ. So in a sense, even though that's selfish, but it takes you somewhere near to virtue. Your mic is off. Yes, Abdullah, जैसे कि we were discussing कि there were some kinds of blacks and whites, जैसे कि हमने example ली of using drugs. Abdullah, मगर the person who thinks he's using or he's doing that act, that bad act in moderation, deep inside he knows that he's doing wrong. But the another person who is doing a virtuous act in moderation, उसको मालूम होता है कि he is doing right, है कि नहीं? So the bad act, whether आप उसको moderation में करो, it's wrong. But the good act, whether you are doing it in moderation, it is still good, है कि नहीं अब्दुल्ला? It is still virtuous because Yeah, it. sometimes the good act does not remain the good act anymore अगर आप उसको excess में करोगे. For example, we talked about courage, right? Excess of courage is rashness. It does not remain a good act anymore, but it becomes a vice. Aristotle mentions that as well. कि अगर आप उस mean के पार चले जाओ ना, it becomes a vice itself. So if you're acting moderately in a good thing, so in insofar as you're not crossing the mean, you're not crossing that line, so you're virtuous. Beyond that, you're vicious. So to know the lines, to know what not to cross, it requires years of not only study but constant practice, which is हाँ, बट आई एम ट्राइंग टू से कि द पर्टिकुलर गुड वर्च्यूज अगर हम उनको मॉडरेशन में प्रैक्टिस करेंगे, वी वुड बी सेटिस्फाइड एंड वी वुड फील हैप्पी, वी वुड फील प्लेजर. बट द बैड वर्च्यूज लाइक हमने एग्जांपल ली ऑफ यूजिंग ड्रग्स और सेटिस्फाइंग अवर बॉडीली लस्ट, अगर हम उसको मॉडरेशन के अंदर भी करें, we are doing those things in moderation, we would still feel the uh, unsatisfied, or we would still feel pain because deep down we know that कि हम वो उसमें उसको गलत कर रहे हैं. So this means कि जो moderation है, moderation only applies to a particular virtues जिस तरह कि उसने बताया है अरिस्टोटल में. So मेरे ख्याल में this was the last one, Abdullah. yeah. Mm, yeah, this was the last thing he mentioned. He kind of put out three kinds of advice, लेकिन those are very Hmm. generic. अगर चाहे तो हम रिव्यू कर लेते हैं. बट या वो ये कहता है कि यार आपने प्लेजर से दूर रहना है इन दिस सर्च फॉर वर्च्यू, क्योंकि अगर आप उस इफ यू कम अक्रॉस इट, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको टू फाइंड योर वे टू प्लेजर, टू वर्च्यू, क्योंकि प्लेजर इम्पीड्स योर जजमेंट, एंड प्लेजर काइंड ऑफ being a human being and being not born a rational person, तो आपके लिए आसान होता है कि आप खो दो अपने आप को उस प्लेजर के चक्कर में, और उस प्लेजर को जो आप एसोसिएट करते हो विद एन एंड रादर देन जस्ट बीइंग अ मींस और बीइंग अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्शंस, you lose yourself in that search for something greater than it.
So do not do that. Stay away from pleasure, and if you are to indulge in it, only indulge in it as far as it is a means to a greater end. It should not be the end itself. उसके बाद वो कहता है कि उस ये जो मीन है ना, between two extremes, avoid the end which is avoid the extreme which is farther from the mean. And lastly, वो कहता है कि आप गौर व फिक्र करो कि what आपके जो पास्ट में क्या मिस्टेक्स आपने की हैं, क्या एरर्स आपने किए हैं, जो भी आपने पास्ट में किए हैं, उनको कैटेगराइज़ करो बिटवीन विर्चुअस एंड वर्चुअस, एंड स्टे अवे फ्रॉम द विशियस थिंग्स दैट यू जस्ट नोटेड डाउन, ताकि यू डू नॉट रिपीट दोज़ थिंग्स। एंड द थिंग इज़ व्हाई सेइंग दैट, क्योंकि दो दे even though they might not be a lot of things, if you make a list of them, they'll be like 20, 30, 40 different kinds of behavioral patterns, जिसकी वजह से आपने कुछ डिसीजंस किए, एंड इफ यू make them conscious and if you try not to act out those behavioral patterns again, तो ओवरलैपिंग होगी काफ़ी ज़्यादा उन्हीं कुछ बिहेवियर पैटर्न्स की वजह से। यू माइट हैव मेड द मोस्ट मिस्टेक्स इन योर लाइफ, एंड इफ यू करेक्ट दोज बिहेवियर्स, तो यू नो आपका 80% प्रॉब्लम्स जो है ना इन द फ्यूचर वो ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर in our lives are caused by our own selves, by our unconscious minds. So that is what Aristotle, in a way, advises us to do, to stay away from pleasure, to avoid the extreme which is farther from the mean, and to be conscious of our errors and avoid them diligently. That is what the chapter or the book 2 was about. Thank you, Abdullah. I think so. My podcast is it was very brief or very in detail about explaining virtues. तो अब्दुल्ला इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी डिस्कसिंग बुक 3 ऑफ Nicomachean Ethics and till then take care. Allah Hafiz. Hafiz.